Hello students, very warm welcome back in this channel. In this lecture, I will try to share the basic concept like how can we print any string value after using a Python code. How can we print any integer value, किसी भी integer value को, किसी भी string को या after addition, how can we receive result after using a Python code, okay? It's so in my previous lecture, also I try to make you understand, also I taught the basic concept about Python like what is Python, the basic overview about Python, why do I need Python code? Okay, so now let us start and try to understand. Yeah, students, I have a little request to please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. If you want to learn Python, अगर आप Python सीखना चाहते हो, C प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, C++ सीखना चाहते हो, Java सीखना चाहते हो या BSc सीखना चाहते हो after using a C++ code or Java concept, then please subscribe my channel. Now, let us start and try to understand. Here I would like to take a little recap. Simple. अगर मैं जावा की बात करूं एंड इफ आई ट्राई टू ऐड एनी टू इंटीजर वैल्यू, अगर हम किसी भी दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, सो इन दिस केस अगर हम जावा की बात करते हैं तो आई नीड टू राइट 8 लाइन्स ऑफ कोड ओनली टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू इंटीजर वैल्यू. Okay. Similarly, in C++. But when I talk about Python, then simple. Here I directly input any two integer value and after summation, here I print the result like this. Okay. Now, Python का यूज कहाँ कहाँ पर है? तो सिंपल, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑटोमेशन. Now, let us start and try to understand code. Okay. So at first, I would like to open new file. ये हमने VS Code Editor open किया है. And to create a new file, here I click over this file. Now this here, okay. And here I would like to print only hello. So here I write file name hello dot python का हमारा जो extension है वो क्या है? py. Now press enter. Okay. अब सिंपल इफ यू ट्राई टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो C++, जावा में मुझे क्या हेडर फाइल टाइप करना पड़ता था. देन वी टाइप द बॉडी पार्ट. उसके बाद हम क्या करते थे, रिटर्न 0 या गेट ch अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट आई पुट. ओके. बट इन पाइथन, पाइथन में हम क्या करेंगे, सिंपल हियर आई राइट प्रिंट एंड एनी स्ट्रिंग. ओके, लाइक hello world. Okay, this one is the favorite code for all. Now press enter. Okay, आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू को आपको प्रिंट करना है डबल कोट्स के अंदर हम लोग डालेंगे. प्रेस इंटर. नाउ सेव दिस, कंट्रोल एस से सेव करेंगे. ओके. नाउ एग्जीक्यूट दिस और एग्जीक्यूट करेंगे. आफ्टर एग्जीक्यूशन you may notice over that this is your file name hello.py. okay, and this is your string hello world. क्लियर? हमने लिखा क्या, सिंपल, हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे थे, सो हमने इसे क्या किया, डबल कोटेशन के अंदर डाला. ओके. नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट एनी इंटीजर वैल्यू, अब अगर हम किसी भी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, ओके, पाइथन इज आल्सो इंटरप्रेट योर कोड लाइन बाय लाइन. ओके, एंड एग्जीक्यूट. ओके. सो if you try to print any integer value, so simple here I write again print any integer value. You may write here, there is not need to use a semicolon for termination. सेमीकॉलम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द टर्मिनेशन पर्पस. और न्यू लाइन के लिए सिंपल आई प्रेस इंटर एंड टाइप द न्यू लाइन. ओके. नाउ एग्जीक्यूट दिस. हमने एग्जीक्यूट किया. नाउ यू मे नोटिस दैट हेलो वर्ल्ड एंड 20. ओके. नाउ द नेक्स्ट, इफ यू ट्राई टू ऐड एनी टू नंबर, अब अगर आप किसी टू नंबर को ऐड करना चाहते हो, so simple, notice over that here I write a equal to 20, okay, b equal to 30. There is not need to use any extra symbol. आप केवल जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो, मैथमेटिक्स में जैसे लिखते हो, simple here I write. okay. Now here I write sum
sum equal to what? I need A plus B. Okay. And now the next line here, I would like to print sum. Okay. Here I like to print a sum. Okay. Now control is. Acha. Here I want to write here sum within double quotes. So in this case, notice over that. The result will what? Simple sum. Okay. Now if you try to print the value, अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हो, so in this case, okay, and now here write sum. Now execute this. So print sum, 1 minute. Yeah. Now execute this. Yeah, now you may notice over that. Here sum equal to 50. Okay. 1 minute. Yeah. Now execute this. So the first line, this will interpret. So then this print hello world. तब ये प्रिंट किया हमारा स्ट्रिंग वैल्यू हेलो वर्ल्ड. नाउ द नेक्स्ट सिंपल, यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना चाह रही थी. सो सिंपल हियर आई राइट प्रिंट 20, देन दिस प्रिंट 20. आफ्टर एडिशन हियर आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू a प्लस बी. ए जिसे मैं असाइन की 20 एंड b इक्वल टू 30. ओके. एंड सम इक्वल टू a प्लस बी. देयर इज नॉट नीड टू टर्मिनेशन मार्क. यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है आपको टर्मिनेशन मार्क देने की. नाउ सिंपल हियर आई राइट प्रिंट सम. सो आप देखोगे कि जो डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, जो भी कैरेक्टर या वर्ड डाला हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग. ये हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा. ओके. एंड दिस इज द वेरिएबल. ये हमारा वेरिएबल है. सो दिस प्रिंट योर वैल्यू. ये आपका वैल्यू को प्रिंट कर रहा है. एंड दिस प्रिंट योर स्ट्रिंग. ये जो डबल कोट्स के अंदर है वो आपका स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है. सो योर आउटपुट लाइक दिस, सम इक्वल टू 50 लाइक दिस. ओके. So thank you for watching this.